भारती के चरणों में नमन कर आज मैं वंदन और अभिनंदन करती हूं उन वीर कार्यकर्ताओं का जिन्होंने पूर्ण उत्साह के साथ विजय श्री को समर्पित इस यात्रा का अभिनंदन किया, स्वागत किया। इस मंच पर विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता पीसी थॉमस जी, अल्फोंस जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मैथ्यू साहब, मंडल के अध्यक्ष अनिल जी। और इस मंच की शोभा बढ़ाते आज वो शूरवीर कार्यकर्ता हैं जिनका खून पसीना बहा ताकि भारतीय जनता पार्टी का ये परचम, ये फ्लैग शान से केरल की धरती पर लहरा सके। ये परचम जो भाजपा का लहराता है, इसमें जो कमल का फूल है वो प्रतीक है विकास का। ये परचम जो भारतीय जनता पार्टी का लहराता है, उसमें तीव्र गति से अगर कोई लहर है तो वो हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। ये परचम भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक है उन 300 कार्यकर्ताओं के बलिदान का, जिनको केरल की धरती कभी भुलाएगा नहीं। Today I have the proud privilege of being a part of a yatra that symbolizes the aspirations of people. I am blessed to be part of a yatra which symbolizes the dreams of our people. I am honored today that through this yatra, under the leadership of Surendran ji, I can pay homage to over 300 Karyakartas of the Bharatiya Janata Party and Swayam Sevaks who have lost their lives, and yet their families ask for justice for all and appeasement of none. It gladdens my heart when I say Bharat Mata ki Jai and you all join me with fervor, and it breaks the hearts of many Indians when the Gandhi's kind goes to the capital of our country and asks for Bharat ke tukde. Surendran ji and Matthew ji were speaking of Rahul Gandhi. That gentleman, yes, left and abandoned Amethi and ran to Kerala because after 15 years, the people of Amethi decided to teach him a lesson. Surendran ji, today is an auspicious day for Karyakartas of Bharatiya Janata Party, because yet again in the panchayat and local body elections in a state like Gujarat, the Bharatiya Janata Party has won a decisive victory and the Congress has been uprooted. Such is the defeat of the Congress Party that the opposition leader and the Congress state president had to resign in shame. The reason for their defeat is because they tried to divide the people. The reason for their defeat is because they tried to unleash a campaign of lies. The reason for the Congress defeat is a defunct leadership that cannot lead its own organization. और ऐसा नेता केरल में क्या खास नेतृत्व कर पाएगा? A gentleman who does politics of convenience, a gentleman who does not come down harshly on the LDF. It is the LDF and the UDF which are partners in crime, and the measure of the people of Kerala is such that in the forthcoming assembly elections, it is my appeal to the citizens of Kerala to denounce and defeat this unholy, unseen partnership. These partners in crimes need to understand that the people of Kerala are awakened and they will have their corruption no more. They will have their nepotency no more. They will have their flayings no more. And when I say that the people of Kerala will defeat the lies of the LDF, the UDF, when I say that the lies of the Congress party will stand exposed in Kerala, I say so because Rahul Gandhi and the Congress party's politics is and only is based
on false promises to the people. Look at the way he does his politics. He promises a department of fisheries when Modi has already made an entire ministry dedicated to fisheries and fishermen. Look at the false promises that he makes. He celebrates the Sabrimala verdict, but then tells his party to join cause with the Sabrimala movement. And it is this lie, this untruth of the Congress party that today stands exposed in Kerala. I today appeal to the citizens of Kerala that the Bharatiya Janata Party ensured that the Ram Mandir is built, and this is the same Bharatiya Janata Party that will do justice to the Sabrimala movement. Look at the politics of the Congress party, a party that was not to be seen in the service of the people when the people were confronted with pandemic, a party that was not available to serve the cause of the poor. And as a Bharatiya Janata Party worker, today I proudly say that when COVID-19 pandemic engulfed our country, it is the Narendra Modi government that made sure that 80 crore citizens of our country receive free ration for 8 months. The Congress party has a leadership that spends more than half of its time traveling overseas, and the BJP has a leadership that in the pandemic under Vande Bharat got 11 lakh Kerala citizens back to the country so that they could be integrated with their families in the time of pandemic. The Congress party is known for a leadership where the brother-in-law loots the lands of the poor farmers, and the Bharatiya Janata Party is known for a leadership which under Kisan Samman Nidhi gives over 4,000 crore rupees into the bank account of 36 lakh farmers in Kerala. The Congress party is known for a leadership which builds its own houses and fills its own coffers, and the Bharatiya Janata Party under the leadership of Narendra Modi has ensured close to 2 crore homes for the poor in the rural and urban area, in which 45,000 homes were built only for the citizens of Kerala. Be it the LDF, be it the UDF, I want every Karyakarta to ask oneself, was it ever possible to see poor families get 5 lakh rupees of medical cover per year in over 24,000 hospitals across the country, if not for the leadership of Narendra Modi? And that is why today, on behalf of the Kerala unit of the Bharatiya Janata Party, I give special thanks to the Honorable Prime Minister, because Ayushman Bharat Yojana has benefited over 32 lakh citizens only in the state of Kerala. Surendran ji, एक तरफ मैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार की उपलब्धियां बता सकती हूं, और ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बता सकता है, और दूसरी ओर केरल की सरकार ये नहीं बता सकती कि फिशरीज के में 5,000 करोड़ का घोटाला उनके नेता ने किया या नेता के अंतर्गत किसी ऑफिसर ने किया। कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र संगठनों ने देश की जनता के सामने करप्शन के कई अनोखे उदाहरण रखे, और मैं जानबूझकर कहती हूं कि एलडीएफ और यूडीएफ में कोई फर्क नहीं। एक तरफ कांग्रेस का एक सहयोगी संगठन चारे में घोटाला करता है, दूसरी तरफ केरल में मच्छी में घोटाला होता है, और यहाँ पे नेता सोना भी खा जाता है। मच्छी का घोटाला कहो, गोल्ड की स्मगलिंग कहो, जवाब एक ही आता है कि मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं। अरे जिस मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं, उस मुख्यमंत्री को वोट देकर क्या फायदा? इसलिए जनता को जाकर कहें कि चुनाव में पोलिंग बूथ पर आए, कमल का बटन दबाएं और जानकार नेतृत्व केरल में पाएं। और जब मैं यह आवेदन करती हूं, जब सब जनता के और कार्यकर्ताओं के सामने ये प्रार्थना करती हूं, इस प्रार्थना में एक कष्ट भी छुपा है। खून की होली खेलना केरल में इन पार्टियों ने बंद नहीं किया है। 300 हमारे कार्यकर्ता और स्वयंसेवक मारे गए हैं। कुछ दिन पहले ही एक नौजवान नंदू कृष्णा की भी हत्या की गई है। रक्तपात की ये होली केरल में तब समाप्त होगी
जब लोकतंत्र का आप उत्सव मनाएंगे और जनता जनार्दन के साथ पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएंगे। इसलिए आज विजय यात्रा के उपलक्ष्य में मैं मात्र यही निवेदन करती हूं कि जो जनता इस यात्रा से जुड़ रही है, उस जनता से हम कहें कि हम संकल्प लेते हैं कि विजयश्री होने के बाद, जैसा कि सुरेंद्रन जी ने कहा, पब्लिक सर्विस कमीशन जो पार्टी सर्विस कमीशन बन गई है, उसका नेपोटिज्म और उसका तंत्र पूरा का पूरा ध्वस्त करेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं आज इस यात्रा के उपलक्ष्य में जनता से आह्वान करती हूं कि जितना पैसा केरल की तिजोरी से लूटा गया है, चाहे वो गोल्ड स्मगलिंग के माध्यम से हो या फिशरीज के स्कैम के माध्यम से हो, वो एक एक रुपया केरल की तिजोरी में लौटाया जाएगा ताकि केरल की जनता की सेवा हो सके। जितने कार्यकर्ता रात को 9 बजे भी इस यात्रा का स्वागत करने के लिए उपस्थित हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की पूरी टीम की ओर से, राष्ट्रीय संगठन की ओर से मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। बोलो भारत माता की जय। థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నేషనలిస్ట్ హబ్. తెలుగు మీడియా చూపించని మరిన్ని వాస్తవ కథనాలు, వార్తలను మిస్ కాకుండా ఉండేందుకు మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ను పొందేందుకు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి. మీ అమూల్యమైన సలహాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలుపుతూ వీడియోను లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. జై హింద్.